Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing surface of revolution, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना. Let us revise some basic part. As you know that if the arc of any curve is rotated about x-axis, suppose this is x equals x1, this is x equals x2, this length is ds, then required surface area, you know that, but suppose this point is P and here it is M, so this is the perpendicular, and say this. So it is integration from x1 to x2 2 pi y ds, and you remember y means this perpendicular length, so it is Pm. That is this one. Now instead of this, if it is rotated about y-axis, suppose it is, then you see the limit, this is, I say, y equals to y1, y equals to y2, and this is the perpendicular, like this. This is the strip, suppose this point is P, and here this is N, then this will be x. If the coordinates of P, x comma y, and here P, this is x comma y, then this is y. So required surface area, remember this is about y-axis, then the formula is 2 pi x dx, then it is y equals to y1, y2, 2 pi, x means the length of a perpendicular, Pn, and here it is ds. Okay, then this ds is, since it is with respect to y, so we write it ds by dy into dy. You know that. Instead of this, we write this one. And here it is, ds is replaced by ds by dx, because it is with respect to x and it is with respect to y. This is the circulation about x-axis, and here is the circulation about y-axis. Now if it is neither x-axis nor y-axis, suppose it is parallel to x-axis or parallel to y-axis, I mean to say, suppose it is this is a circle, for example. Remember this. And we have already done, you have seen the animation of this part. If this
semicircle, upper part is rotated about x-axis, then the sphere was formed, and the area of sphere, that is 4 pi a square. If it is rotated about x-axis or if it is rotated about y-axis, both are the same because the figure is symmetrical about x-axis and y-axis. Now the question is, an arc means चाप, हिंदी भी बोलूंगा लेकिन आपको इंग्लिश टर्म्स भी आनी चाहिए, आपको याद रखनी है. एन आर्क ऑफ अ सर्कल, वृत्त की चाप, ऑफ रेडियस ए मीन्स ए त्रिज्या का वृत्त, रिवॉल्व्स अबाउट इट्स कॉर्ड, जीवा. किसके जीवा? चाप के जीवा. जैसे ये चाप है, इट इज दिस, ये चाप, इसका टुकड़ा एक, इसके जीवा मीन्स इसको यहां से यहां तक मैं ज्वाइन करता हूं तो इसकी जीवा बनेगी. दिस इज द कॉर्ड ऑफ दिस आर्क. क्वेश्चन करने से पहले उसको समझो, उस पर टाइम बिताओ थोड़ा सा, न्यूज़पेपर की तरह मत पढ़ो, एक एक वर्ड को चबाओ, उसको एनालाइज करो, उसके बाद देखो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या पूछा गया है. An arc of a circle of radius a revolves about its chord. वो अपनी जीवा के चारों तरफ वो आर्क घूम रही है. यहां पर जो ये सेमी सर्कल था, ये वाला, ये भी तो एक आर्क है. दिस आर्क इज रोटेटेड अबाउट इट्स कॉर्ड. ये इसकी जीवा है जो कि इसका डायमीटर है, लेकिन यहां पर जो इसकी कॉर्ड है, यहां पर जो ये लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, वो एक्स एक्सिस है. इन द क्वेश्चन दिस इज नॉट एक्स एक्सिस, दिस इज द कॉर्ड. जीवा के चारों तरफ उसको घुमाना है. किसको घुमाना है? आर्क को. किसकी आर्क है? सर्कल की, जिसका रेडियस कितना? ए. सेंटर नहीं दे रखा उसका. सेंटर हम हमारी सुविधा के लिए, ऑरिजिन को मैंने इस सेंटर सपोज कर लिया. सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. Here it is. So, if 2 alpha be the angle subtended by the arc at the center, 2 alpha जो एंगल है, वो जो ये आर्क है, ये वाले आर्क, वो सेंटर पे एंगल बना रही है. कितना? 2 alpha, and alpha is less than pi by 2. If suppose this condition is not given, by the way, suppose I consider alpha, 2 alpha is pi, then it will be the complete angle, that is this complete one. So this angle is given 2 alpha, so as symmetry I consider, here it is, I consider this one. ए बी, ऐसा लिखता हूं तो ये चाप ए बी है, और यदि मैं इस तरह से लिखता हूं तो ये कॉर्ड है, जिसको मैं बोलता हूं जीवा. दिस मेक्स एन एंगल 2 alpha at the center, means this is 2 alpha, so by symmetry this is alpha and this is alpha. Look at this, here it is. यहां ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस के चारों तरफ मूव करेगी ये आर्क. डायग्राम कैसा बनेगा आपको मालूम होना चाहिए. यहां ये वाई एक्सिस के, यहां पर जो है इस कॉर्ड के रेस्पेक्ट में मूव करेगी. सो दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, आई कंसिडर दिस इज द स्मॉल एलिमेंट. हियर इट इज, आई कंसिडर दिस इज द स्मॉल एलिमेंट. इट इज about this line, means here it is, just like this. This line is parallel to this. यहां से मैंने perpendicular drop किया, ये देखिए ऐसे. This is P, here it is N, and if it is dropped here, then this is N. ध्यान रखना है मुझे इसके रेस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करना है. It is this one. Okay, so
an arc of a circle of radius a revolves about its chord if 2 alpha with the angle subtended by the arc at the center. चाप ने वृत्त के केंद्र पर 2 अल्फा एंगल बनाया है, एक कंडीशन दे रखी है, आप डायग्राम से देख सकते हो. प्रूव दैट द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड इज दैट मच. मींस ये जो येलो वाली आर्क है ये घूमेगी ऐसे, किसके चारों तरफ, ये जो पिंक वाले जो मैंने लाइन बना रखी, जो कॉर्ड है यहाँ वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ इसके ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पर y ले रखा क्योंकि y रेडियस, y त्रिज्या की वो पट्टी बनती है, यहाँ पर x त्रिज्या की पट्टी बनेगी और यहाँ पर इस वाले त्रिज्या की पट्टी बनेगी जो यहाँ पर ऐसे मूव करेगा इसको. सो व्हाट इज द एरिया नाउ? Just I hope the concept is developed. Now we can write the area. Therefore, the required surface area. This is above this line as well as below this line, so it will be double 2 times 2 pi. Now instead of y पहले मैंने y या x लिखा था, अब ये वाला लेंथ लिखना है. It is Pn of ds. Limit, this is y equals to 0, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब देख सकते हो y equals to 0 and here it is y equals to this one. So suppose I say this is for example this point is C, here it is. So what is the x coordinate of A? X coordinate of A is OC and y coordinate of this one is AC. So it is y equals to 0 to y equals to AC. So we will calculate all the things. So it is y equals to 0. This one. AC. Now we find according to figure. Look at this triangle. In triangle OCA, this is alpha and this is the radius A is given. So base upon hypotenuse, that is OC upon OA. This is cos alpha and OC is OA. OA is A, so it is A cos alpha. Also AC perpendicular upon OA. Perpendicular upon hypotenuse. So this is sin alpha. Therefore AC is A sin alpha. Okay. The radius of the circle is A and center is the origin, so its equation you know that it is standard equation x square plus y square equals to, now this is 2 times double care किया, ये ध्यान रखना, this is above x axis as well as below x axis. So we will consider this part. Here it is. Okay. So it is 2 times 0. What is AC? AC is A sin alpha. This is 2 pi Pn. Pn. ध्यान रखना यदि ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट होता तो मैं इसको यहां से उठा के यहां पटक देता. इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ये ध्यान रखना
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसकी बात कर रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ उठाता तो ये x वाला पार्ट होता, ये y वाला पार्ट होता, बट इट इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो मुझे सब कुछ इस लाइन के रेस्पेक्ट में काम करना है। जो काम आपने y एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया वही काम इस पिंक लाइन के रेस्पेक्ट में काम करना, क्योंकि पिंक लाइन के चारों तरफ मूव हो रहा है, केवल ये वाले आर्क। यदि ये कंप्लीट आर्क यहां मूव करती तो ये बिल्कुल स्फीयर बनता, बट इट इज लाइक दिस। Pn is this one. So Pn is OM minus OC. 2 times of 0 to A sin alpha 2 pi OM. The coordinates of this point I have assumed x comma y. So OM is OM is x and minus OC we have calculated somewhere else. It is A sin alpha, A cos alpha. Okay. ds because it is parallel to axis. This is a 4 pi 0 to A sin alpha x minus A cos alpha ds by dy of dy. Okay. Remember, if alpha is 0, थोड़ी देर के लिए सोचो कि यदि अल्फा 0 होता तो ये पॉइंट उठकर यहाँ आ जाता, तो केवल x रहता। अल्फा इज 0, by the cos 0 is 1, then it becomes A. OC, yes. This is number 1. Now we have x square plus y square equals to a square on differentiating with respect to y, because it is ds by dy, so it is 2x dx upon dy plus 2y equals to 0 implies dx by dy is minus y upon x. Therefore dx upon dy whole square is y square upon x square. Okay. Now ds upon dy is under root of 1 plus dx upon dy whole square. This is under root of 1 plus, this is y square upon x square root x square plus y square upon x square. This is a square, so it is a by x. Okay, therefore from first required surface area equals
This is 4 pi 0 to a sin alpha x minus a cos alpha ds by dy is a by x of t. Now remember, integration is with respect to y. So I just write it is 4 pi 0 to a sin alpha. So it is a dy minus yes, this is 4 pi a square, 4 pi a to a square, and cos alpha is constant, so I write outside, then it is 1 upon x dy. This is 4 pi a 0 to a sin alpha. This is minus 4 pi a square cos alpha. This is 0 to a sin alpha. The value of x. One upon under root a square minus y square. Since x square plus y square equals to a square. This is 4 pi a. Now integration is y 0 to a sin alpha minus 4 pi a square cos alpha. Its integration, people remember, it is sin inverse y upon a. 0 to a sin alpha. Okay. Mathematics it is. Now it is 4 pi a into a sin alpha minus 4 pi a square cos alpha, upper limit a sin alpha, so a and a cancelled out, sin inverse sin alpha is alpha, so this becomes 4 pi a square is common, then sin alpha minus alpha cos. So this is the way to solve the complete question. Integration is must. You must have the strong knowledge of integration, okay, and some knowledge of geometry also. So we have done how to find the surface of revolution about x-axis, about y-axis, and the line other than x-axis and y-axis, but it is either parallel to x-axis or parallel to y-axis. If you have difficulty, then you just comment in the comment box. Thank you very much. Jai Hind.